Good evening and welcome to the Tuesday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद राजेश। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज कार्यक्रम में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ उदयन रे। उदयन जी नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। वार्म वेलकम उदयन। धन्यवाद सोनू, थैंक्स राजेश। और अब हेडलाइंस के साथ हैं राजेश लेक। Domestic stocks climb more than 0.5%. Sensex finishes above the 59,000 mark. Nifty settles above the 17,500 level. Global stocks logged losses amid fear of interest rate hike by the US Fed. And Brent crude rise more than 1% to $96.20 per barrel. घरेलू शेयर बाजार 0.5% से अधिक की बढ़त में रहे। सेंसेक्स 59,000 के स्तर से ऊपर और निफ्टी 17,500 के ऊपर हुए बंद। यूएस फेड द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि की आशंकाओं के बीच वैश्विक शेयर बाजारों में गिरावट का रुख और ब्रेंट कच्चे तेल का मूल्य 1% से अधिक बढ़कर $96.20 प्रति बैरल पर पहुंचा। सेंसेक्स और निफ्टी आज लगभग 0.5% की बढ़त में रहे। वैश्विक शेयर बाजारों से संकेत नकारात्मक रहने के बावजूद दोनों प्रमुख घरेलू सूचकांक बढ़त में रहे। सेंसेक्स 59,000 के स्तर से ऊपर बंद हुआ और निफ्टी 17,500 के स्तर को पार कर गया। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.44% की तेजी से 257 अंक बढ़कर 59,031 पर जा पहुंचा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.5% की वृद्धि से 87 अंक बढ़कर 17,578 पर बंद हुआ। व्यापक बाजार की बात करें तो यहां प्रदर्शन और भी बेहतर था। बीएसई मिड कैप सूचकांक 1.03% के उछाल में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.78% की वृद्धि दर्ज हुई। The Sensex and the Nifty today gained around 0.5%. Both key domestic stock indices rose even as the cues from global share markets were negative. The Sensex finished above the 59,000 mark while the Nifty ended above the 17,500 level. The Sensex climbed 257 points or 0.44% to finish at 59,031. The Nifty also appreciated 87 points or 0.5% to settle at 17,578. In the broader market at the BSE, the mid-cap index rose 1.03% and the small-cap index added 0.78%. In the Sensex pack, 21 companies posted gains while 9 logged losses. Mahindra & Mahindra was the top gainer as it climbed 3.8%, followed by Bajaj Finserv, which gained 2.8%. Titan surged 2.6% and Tata Steel added 2.4%. On the other hand, TCS and Infosys both lost 2.1% each. HCL Tech plunged 1.3% while Hindustan Unilever and Tech Mahindra both fell 1.1% each. In sectoral indices, at BSE, 17 sectors gained while 2 logged losses. Metal sector gained 2.1%, auto index rose 1.7%, and consumer durables ended 1.4% up. On the other side, IT sector tumbled 1.7% and tech index slipped 1.4%. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 2,042 companies gained while 1,370 fell. Shares of 137 companies remained unchanged. रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपए में कोई खास बदलाव नहीं हुआ और वह 79 रुपये 87 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स अंतर दिवसीय कारोबार में 109.04 पर था। उदयन बाजार में एक रैली थी लगभग एक महीने से। पिछले 2 जो सेशंस हुए उसमें लग रहा था कि शायद वो रैली टूट गई है। आज आपको लगता है कि हालांकि बहुत ज्यादा बढ़त नहीं हुई है, 257 पॉइंट्स बढ़ा है सेंसेक्स, लेकिन जो उन्होंने विपरीत एक प्रदर्शन किया है, सारे वैश्विक बाजारों में गिरावट का रुख है, उसको देखते हुए आप कैसे देखते हैं अभी बाजार की स्ट्रेंथ को आगे? देखिए, ये आज भी आपने अगर देखा होगा कि काफी फ्लक्चुएशन रहा था और इट सो हैपन्स कि जो बढ़त है उस हिसाब से वो बंद हुआ। तो ये ज्यादा मैं ओवरऑल ट्रेंड आज के अप मूव के बजाय फोकस करने के बजाय मैं पिछले कुछ वक्त और आने वाले कुछ वक्त के होराइजन में देखना चाहूंगा इस पूरे इवेंट को। और उसमें यह है कि उतार चढ़ाव जो है का सिलसिला वो बरकरार है। तो अगर आप फॉरेन इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स के बारे में देखें, उन्होंने जितना निवेश निकाला था उसका तकरीबन लार्ज पार्ट वापस आया। फिर अब कुछ दिन और आगे बढ़ के चलेंगे, फिर आप देखेंगे थोड़ा सा पीछे गया। तो ये टैक्टिकल प्ले जहां पे आप फॉरेन इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स कुछ खास देशों में खास वक्त में अपॉर्चुनिटी ढूंढते हुए जा रहे हैं। तो कई बार क्या होता है, सेंटिमेंट और टैक्टिकल प्ले में ये मार्केट का मूवमेंट का हिसाब किताब होता है। पर लार्जर जो बिगर फैक्टर है वो तो फेडरल रिजर्व का के जो कदम है वही होंगे। ऑल्दो वो कदम अभी होने में कुछ दिन बाकी हैं, ये मिड सितंबर के आसपास उनकी मीटिंग होगी, पर शुक्रवार को ये उम्मीद है कि कुछ बयान निकलेंगे वहां से फेडरल रिजर्व के चेयरमैन से, जिससे मार्केट को थोड़ा सा अंदाजा मिलेगा कि कैसे आगे वो डायरेक्शन या दिशा क्या मिलेगी और उसी तरफ नजर है। तो आपकी जो विश्व के वैश्विक बाजार हैं वो उनकी नजरें वहां गड़ी हुई हैं, और क्योंकि उनको थोड़ा सा नर्वसनेस, चिंताएं हो रही हैं, आशंकाएं हैं, तो आपने देखा पाया होगा कि वहां से वैश्विक बाजार में वो नर्वसनेस छलक रही है। पर यहाँ पे हमारे भारत में वो चीज नहीं दिखी। तो मेरा मानना ये टैक्टिकल प्ले की वजह से हो सकता है, कुछ इंडिविजुअल कंडीशंस हो सकते हैं, कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स हो सकते हैं। जैसे आपने महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में बात की, तो उनके कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और उस दिशा में जो उनके इनिशिएटिव्स हैं, उनके जो प्लान्स हैं, उनकी खबरें आ रही हैं, उसकी वजह से एक अपबीट मूड सा है। मिड कैप स्मॉल कैप भी बढ़े हैं। जी बिल्कुल। तो रिस्क ऑन जो बिहेवियर है वो इंटायरली एक रिलीफ रैली हो सकती है, एक टैक्टिकल प्ले की वजह से हो सकता है, मिक्सचर हो सकता है। पर इसको अगर कहें कि बुनियादी कुछ जो कंडीशंस है उस वजह से हो रहा है, मुझे नहीं लगता उतनी बड़ी बात है ये। But then you mentioned a while back that Jackson Hole is going to decide on what is going to happen, and don't you think the markets should be prepared for what is on the anvil, considering the fact that US is all along, or the Fed is all along, saying that they are going to have a hawkish stand? Yeah, that's an interesting point, and your point is very valid. Now, a lot of experts are saying that for some reason the markets thought that the Federal Reserve is going to, take a breather and it's going to pivot. It's not going to because there was a small data points which are indicating things are softening up. At a larger level, the trend is pretty clear. There's a little bit of softening up in the US economy. In other economies, they have softened up long back. So there might be a let up. Now, what these experts are arguing, they're saying that the Jackson Hole speech, the speech at Jackson Hole, is going to reiterate the fact that the let up that you're talking about is not going to happen. So the idea is to again reinforce that fact and maybe put in 2 underlines beneath the line to say that we are on course and we're going to be fairly aggressive about it. So that's what is being expected, and therefore the issue is not about the indication of what's going to happen in terms of rate hikes. The question is it going to be 50 basis point or 75? If you had asked about 2 weeks back, people would have said, it's going to be a 50 basis point or a 0.5 percentage point. Now it's very evenly divided.
Some people think it's 75%. So they've done a poll, and the odds are almost evenly divided. So उदयन, आपको लगता है कि ये बैलेंसिंग एक्ट है यूएस फेड के लिए भी, कि एक तरफ उनको ये भी दिखाना है कि हम बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं होंगे, ग्रोथ का ध्यान रखेंगे, एट द सेम टाइम दे हैव टू मेक एंश्योर एवरीबडी कि हम इन्फ्लेशन को नीचे लाने के जो पूरे प्रयास हैं वो जारी रखेंगे, क्योंकि जैसा आप कह रहे हैं कि कम हुआ है लेकिन 8.5% है अभी भी इन्फ्लेशन, जबकि उनका जो टारगेट है वो 2%। एब्सोल्युटली। देखिए, सबसे पहले तो उन लोगों ने स्टडी किया, एस्टिमेट किया, तो हम लोग तो फिर भी अच्छे हैं भारत में, हम 4% प्लस माइनस 2%, तो हम उस लक्ष्मण रेखा के थोड़ा सा ही आगे, वो इतने आगे हैं, तो लोगों का एस्टिमेट ये है कि कम से कम 2 से 2.5 साल लगेंगे 2% के इर्द गिर्द आने में। और हो सकता है कई लोगों को कहने कि आप वो 2% नहीं रखेंगे, 4% रखेंगे, क्योंकि इतना इंट्रेंच्ड हो गया। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो ये है कि फेडरल रिजर्व या सेंट्रल बैंक करने का तो करेंगे, पर अगर आप देखें पिछले 2 साल में फॉरवर्ड गाइडेंस, जहां पे आप टॉक कर रहे हैं, मार्केट को बता रहे हैं कि हम ये करने वाले, ये करने वाले, ताकि लोगों को कुछ और ना समझे और मार्केट में कोई अलग दिशा में ना चले जाए, फॉरवर्ड गाइडेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो आप इस तरीके से कर रहे हैं कि आप वो फॉरवर्ड गाइडेंस इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको मार्केट को ये ना लगे कि ये ओवरशूट कर जाएगा, आप ओवर किल कर जाएंगे, ज्यादा कर जाएंगे। आप सॉफ्ट लैंडिंग जिसे कहते हैं, धीरे धीरे करके कूल डाउन करके फिर उसको दोबारा टेक ऑफ कराने की कोशिश करेंगे। जबकि सोनू, ऐसी कोई एविडेंस नहीं है कि कोई भी सेंट्रल बैंक सॉफ्ट लैंडिंग कभी करा पाई है, ऐसा सबूत आपको शायद ही मिलेगा। तो ज्यादातर लोग इस चीज को दिखाते हैं कि सॉफ्ट लैंडिंग कहना बड़ा आसान है, और क्योंकि सेंट्रल बैंक्स के लिए एक और क्रेडिबिलिटी चैलेंज हो गया, क्योंकि फेडरल रिजर्व के लिए ज्यादा हुआ है, भारत के लिए तो उतना नहीं है। उन्होंने ये कहा था ये ट्रांजिएंट है, ये तो कुछ पल भर का है, ये निकल जाएगा। वो बादल, इन्फ्लेशन के बादल, वो या हीट वेव जो है वो छटी नहीं है, कुछ ठंडा नहीं हुआ है, एंड इसलिए वो आप पाएंगे कि ये नैरेटिव और जो कॉन्वर्सेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता चला जा रहा है। Okay, then look at the reality of Sensex. We had a touch and go moment with 60,000, and while Nifty 50 is also trading above 17,000. Do you think the fresh high is highly possible in 2022, given that we already have the festival season just round the corner and the inflation pressure is not so much anymore? Oh, absolutely. See, I agree with your inflation pressure bit. It seems to be softening up. The RBI governor seems to think that it's softening up. He's said as much today in one of the interviews. So that's number one. Yes, festival, it's the jury's out, but probably we'll have possibly a decent run. It looks like that. So all those things are well taken. Even you might also hit a high. But Rajesh, the point is people are not investing in the index. Okay, even if you invest in the index, you're going to find lots of going ups and downs that are happening. So it's going to be a tremendously skilled investor who will be able to take the right decisions as to when to, if you're timing the market, you really have to be one of the best ever in the world who has been ever produced to, really get it right. So therefore, the biggest problem or biggest challenge, shall I say, would be the volatility, how you're going to negotiate it. And there's some, so if you go on a slightly more circumspect, defensive sort of a thing, where you're looking only at the earnings visibility of stocks, you're seeing you've got very established business models of these companies. They're established in their business. No growth companies where they'll hit profitability 3 years down the line. You're not looking at that. If you do things like that which are boring, then you'll score well. But
just because the market is hitting a high, that doesn't mean even smart fund managers and investors are going to do well. If you look at some of the fund performances across different classes, I'm talking mutual funds, equities, you'll find a lot of them are now lagging behind the benchmarks. That doesn't mean there aren't outperformers who are doing far better than benchmarks, but the number of laggards are astonishingly more. So, which is showing that, unless you have got very nimble sort of investment philosophy for those funds, not all of them have give fund managers that license, then you cannot say just because the markets are going up, my fund is going to do well. Just because I've invested in equities, I'm going to do well. So individual stories are becoming important, and it is very difficult to figure out, because suddenly there's a supply chain related issue, there's an inflation issue, you don't know if you're exporting, you just don't know what suppose you're investing in Europe and it's going to hit a recession as it is being widely expected, then what exactly are you supposed to do? Suppose Russia was one of your markets, Ukraine was one of your markets, what are you going to be doing? So the number of unknowns, number of balls up in the air are far too many. तो जैसा कह रहे हैं कि बहुत सारी अनसर्टनिटीज हैं और निश्चितता से कहना कि क्या डायरेक्शन रहेगी या किस सेक्टर की क्या डायरेक्शन रहेगी अभी बहुत मुश्किल है, लेकिन जो अभी जो लेटेस्ट डेटा आए हैं या लेटेस्ट जो ओपिनियंस आई हैं, मारुति ने कहा है कि आरबीआई द्वारा इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने के बावजूद हमारी जो डिमांड है वो कम नहीं हुई है. सो रेट सेंसिटिव सेक्टर है ऑटो सेक्टर, उसमें ऐसा होना या आपको एक सिग्निफिकेंट वो लगता है कि शायद वो जो एक फियर था कि ग्रोथ इफेक्ट होगी वो भारत में नहीं होगा. एंड ऑल्सो ये भी सामने आ रहा है कि जो स्टेपल्स हैं, एडिबल ऑयल, बिस्किट्स या इलेक्ट्रॉनिक्स जो कंपनीज हैं, वो जो हाल में इनपुट प्राइसेस कम हुए हैं उसका बेनिफिट कंज्यूमर्स को पास ऑन कर रही हैं. तो अगर वो और डिस्काउंट्स भी दे रही हैं, तो अगर ये प्राइसेस नीचे आते हैं तो इन्फ्लेशन को भी कहें कि इन्फ्लेशन में और राहत की उम्मीद की जा सकती है और डिमांड डिस्ट्रक्शन जो है वो मिनिमाइज हो, उसकी भी आशा की जा सकती है. बिल्कुल की जा सकती है. और हमें याद रखना पड़ेगा कि हमारी जो ओपनिंग अप है वो विश्व के पश्चिमी देशों के बाद हुई है. सर्विसेज सेक्टर जो है, तो जो हमारी रीओपनिंग जो पिवट थी, जो थीम थी, उसका जो बेनिफिट है उसके कुछ महीने अब हमें मिल रहा. अब हम बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि साल की शुरुआत में ओमिक्रॉन का दौर था जब सब कुछ बंद हो गया था, काफी कुछ बंद हो गया था. तो काफी जो सर्विसेज सेक्टर जो मोर देन 50% ऑफ आवर जीडीपी है वो उसका कॉन्टैक्ट जी, तो वहां पे जो रीओपनिंग आप देखिए, टूरिज्म देखिए, फिल्म्स देखिए, एंटरटेनमेंट देखिए, तो वो जो उसका जो असर है वो उसका बेनिफिट हम लोगों को अब मिल रहा है. तो और तब तक हमारी इन्फ्लेशन के ऊपर कुछ हद तक जैसा कि आप कह रहे हैं काबू पाने की उम्मीद है, और फिर अपसाइड तो है, पर हम ग्लोबल जो असर है उससे अछूते रहेंगे, वो नहीं हो पाएगा. So wouldn't we talking about the hawkish comments of the US Federal Reserve and how it's going to impact the economies the world over? What about the growth slowdown in China? How's that going to affect? That's very, very worrisome, Rajesh. Because of the drought now, before it was COVID lockdown, now because of the drought, the heat wave, electricity generation has taken a hit. You would be seeing headlines of power rationing, economic activity like entertainment, etc. There are cutbacks in malls and other things. It's really worrisome. Today, you would have seen headlines of Chinese government actually announcing support for their beleaguered real estate sector. Before last week when I was here, we were talking about support announcement by the central bank. So it is not looking nice. 5.5% was the government's target. Everybody is down to sub 3% now. So it's not looking nice, and that's number 2 economy, by the way. So global, you can't have China suffering and global economy not getting impacted. So if you think the FIIs are going to come back to us because there aren't any investable destinations other than India? Well, they might still. That's a good point, actually. Till Federal Reserve keeps hiking the rates, like us, they are also trying to front load the rate hike. They would like to do it now when the hurt is going to be less. After a couple of months,
if we hold our ground, I cannot see how we will not benefit from this, because we are in a far better place. Although we have suffered because of the lockdowns, our our citizens have suffered, but like the true resilient, brave people that we are, we have stood our ground well, and now it's a couple of months down the line, it will be time to benefit. So on this positive note, लेंगे एक छोटा सा विराम, एक जरूरी संदेश और फिर चर्चा जारी रहेगी। उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 8700014242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 8700014242। मार्केट मंत्र में आपका फिर स्वागत है। बहुत ब्रीफली आप कह रहे थे कि ग्लोबल जो असर है उससे हम अछूते नहीं रह पाएंगे, तो 2013 के मुकाबले अभी आप हमारी स्थिति को कैसे? काफी बेहतर है, हम काफी बेहतर हैं। ना तो फिस्कल पॉलिसी देखिए, हमारे रिफॉर्म्स देखिए, हमारे फाइनेंशियल सेक्टर को देखिए, कितना टॉक्सिक जो मटेरियल था हमारे फाइनेंशियल सिस्टम, उसको पर्ज किया गया है। उसके हमारे रिफॉर्म्स में मेजर सेक्टर्स में एक स्ट्रेंथ लाया गया है। हम वहां से काफी दूर हैं, और अगर थोड़ा सा भी हमें बेनिफिट मिल जाता, मान लीजिए ऑयल प्राइसेस वगैरह मॉडरेट कर जाती हैं, वी विल डू फार बेटर देन मेनी अदर इकोनॉमीज। आइए अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की ओर और फिर इस चर्चा को जारी रखेंगे। अन्य एशियाई शेयर बाजारों में जैसा हमने पहले बताया, आज गिरावट का रुख रहा। जापान का निक्केई सूचकांक 1.2% के नुकसान में रहा और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 1.1% की गिरावट में रहा। हांगकांग के हैंगसेंग में 0.8% की मंदी रही। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक में 0.5% का नुकसान दर्ज हुआ और चीन के शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक में 0.1% की मंदी रही। यूरोपीय शेयर बाजारों में अंतर दिवसीय कारोबार के दौरान रुख मिला जुला था। लंदन का फुटसी 0.7% के नुकसान पर था और फ्रांस के कैप में 0.2% की गिरावट थी। हालांकि जर्मनी के डैक्स में कोई खास बदलाव नहीं हुआ था। The United Kingdom has recorded its biggest fall in output in more than 300 years in 2020 due to COVID-19 pandemic, according to Office for National Statistics, ONS. In a statement, ONS yesterday said that gross domestic product GDP fell by 11% in 2020. According to historical data hosted by the Bank of England, this was a bigger drop than any of the ONS's previous estimates and the largest fall since 1709. The Office for National Statistics initial estimates had already suggested that in 2020, Britain suffered its biggest fall in output since the Great Frost of 1709. UK's economy bounced back sharply last year and recovered its pre-pandemic size in November 2021. Then analysts feel that the fast rising inflation means Bank of England expects the economy will slip back into recession later this year. So the scenario is not going to be good. Yeah, unfortunately, Europe is going to be getting the wrong end of the stick, and what's causing them a lot of suffering are the high energy prices. There's a lot of influence over that, but the worrisome part about the UK economy, which experts are pointing out, that even if you take away the impact of energy prices, the core inflation is also pretty high, and the inflationary expectation, it seems like as if it has got entrenched into the system. So which is actually a problem everywhere. The stickiness of inflation is worrying people. Moving on, Wall Street ended sharply lower yesterday. The U.S. stocks fell as investors fretted about a U.S. Federal Reserve meeting later this week in Jackson Hole in Wyoming, state of USA, where reinforcement of a strong commitment by the central bank to arrest the high inflation is expected. The Dow Jones Industrial Average Index lost 1.9%, the S&P 500 declined 2.1%, and the Nasdaq Composite plunged
2.6%. आपको लगता है कि रिसेशन पर भी जो वक्तव्य होगा वो भी इम्पोर्टेंट होगा इस फ्राइडे के संबोधन में? देखिए, वो अभी रिसेशन शब्द को शायद इस्तेमाल ना करें, उनके एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर रही, तो वो शायद ये शब्द शायद इस्तेमाल ना करें, पर इन्फ्लेशन के बारे में वो काफी कुछ बात करेंगे और कैसे वो इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्फ्लेशन को बैलेंस करेंगे, शायद इसके बारे में जरूर चर्चा करें. Global crude oil prices today rose more than 1% as tight supply moved back into focus as a result of Saudi Arabia floating the idea of OPEC plus output cuts to support prices and the prospect of a drop in U.S. crude inventories. Brent crude was trading at $97.45 per barrel, while WTI crude prices were at $91.35 per barrel. Udayan, how do you see the oil prices unfolding in the coming days, keeping in mind what we have discussed so far about the slowdown in China and also what is happening in the U.S.? Well, Rajesh, I'm not an oil expert in that sense, but then this movement up and down will keep happening. So there might be a little pressure, which will, downward pressure, which can bring it to the late 80s. But it's not going to go back to like mid 70s in the near term, in the near couple of months. Okay. But the worrisome part will be the winter when Europe will need energy. As you know, the whole region is cold. They need energy to heat up their homes and other places, and they're not getting gas supplies from Russia. So the fear is that they would have to resort to other sources of energy, and there is an expectation that apart from gas prices, existing gas prices, all other forms of energy will see a hike. So, oil prices, that should to a certain extent have an upward influence on the oil prices. So that would be telling. One needs to take a look at what all is being done, but that is something which is 4 or 5 months down the line. It is waiting to happen, and people are fairly worried. And briefly, आपको लगता है कि ये जो सऊदी अरेबिया का आइडिया है ओपेक प्लस आउटपुट कट करने का, क्या कोई इंटरनेशनल उन पे दबाव पड़ सकता है, रिक्वेस्ट कि ऐसे समय पे ऐसा ना किया जाए? देखिए, वो तो कभी 4 हफ्ते पहले सप्लाई बढ़ाने की बात कर रहे थे, अब कट के बारे में बात हो रही है, तो उनके पास मुझे नहीं लगता कि उनको सप्लाई इस वक्त बढ़ाने की कैपेसिटी ग्लोबली है, और अगर ग्लोबली आप चाहें भी तो आपके पास रिफाइनिंग कैपेसिटी नहीं है. तो ये कुछ दिक्कतें हैं प्रैक्टिकल, जो इसके अलावा भी और मुद्दे हैं, पर ये कुछ चैलेंजेस हैं जो ऑयल प्राइसेस को इन्फ्लुएंस कर रही हैं. आइए अब चलते हैं सोने की ओर. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर के वायदा कारोबार में सोना 100 रुपए की गिरावट से 51,060 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था. सितंबर अनुबंध वाली चांदी 430 रुपए की गिरावट से 54,560 रुपए प्रति किलो पर थी. उधर न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना वृद्धि दर्ज करता हुआ $1,754.50 प्रति आउंस पर था. चांदी भी बढ़त दर्ज करती हुई $19.07 प्रति आउंस पर थी. सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का इशू अभी खुला हुआ है थर्सडे तक. क्या आप एडवाइस देंगे हमारे लिसनर्स को, क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? बिल्कुल, मैं तो बहुत बड़ा फैन हूं. कूपन रेट मिलता है. वैसे तो सोना रखेंगे तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता. कूपन रेट, अगर उसको आप मैच्योरिटी तक होल्ड करेंगे, टैक्स फ्री हो जाता है. कितने गुण हैं, बहुत बढ़िया है. फिजिकल गोल्ड में सेल करते वक्त आपको लॉस हो सकता है, रखना पड़ता है. सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आप डीमैट से ले सकते हैं, उसके अगेंस्ट लोन ले सकते हैं. लिस्ट बड़ी लंबी है, बहुत जबरदस्त ऑफरिंग है. अगर आपने नहीं लिया, निवेश नहीं किया, तो इंडिविजुअली आई थिंक 4 किलो तक अपर लिमिट है. तो मतलब स्काई इज द लिमिट. बहुत बहुत धन्यवाद आपका उदयन. आप आए स्टूडियो में, आपने विभिन्न विषयों पर विस्तृत जानकारी दी हमारे श्रोताओं को. नमस्कार. धन्यवाद. Thank you for being with us again. And before we close the headlines once again, domestic stocks climb more than 0.5%. Sensex finishes above the 59,000 mark. Nifty settles above the 17,500 level. Global stocks log losses amid fear of interest rate hike by the US Fed, and Brent crude price rise more than 1% to $96.20 per barrel. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.